Good morning, students. Today we are going to continue with our vocabulary part, and you have to open page number 76. So in the vocabulary part we are going to study about analogies. So first of all we are going to read the following comparisons. Sun is too hot as ice is too cold. सन उतना ही हॉट है जितना आइस कोल्ड रहती है. इन द अबव स्टेटमेंट, ऊपर के स्टेटमेंट में वी आर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पेयर ऑफ वर्ड्स. तो हमने यहाँ पे दो पेयर ऑफ वर्ड्स के रिलेशनशिप को पढ़ा. लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट सन, हॉट, आइस एंड कोल्ड. बीइंग हॉट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सन. गर्म होना बीइंग हॉट इज किसका फीचर है? सन का फीचर है. सिमिलरली बीइंग कोल्ड, और ठंडा होना किसका फीचर है? बर्फ़ का, आइस का. Cold is the characteristic feature of ice. This type of relationship based on similarity is called analogy. तो ऐसा ही जो स्टेटमेंट्स जिसमें सिमिलैरिटी शो होती है हमें वर्ड्स में, उन्हें हम बोलते हैं एनालॉगी. सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 77. वी आर गोइंग टू सॉल्व द वोकैबुलरी पार्ट एक्सरसाइजेस. So choose the correct answers from the given option. We have to choose the correct answers. Conclusion essay. So we are going to take on scene, play. Option number D. Locker, storage. Wallet, cash. Honor, disgrace. Safety, peril. Sunscreen, sunburn. Vaccination, disease. Aluminium, metal. Summer, season. Active, idle, brief, lengthy. So like that we have to tick on the correct analogies. So now we are going to start exercise number B, in which we have to complete the following analogies with the words from the box. गोल्ड कैसा है? शाइनिंग. तो वेलवेट कैसा होगा? SOFT, सॉफ्ट. पोएट, पोयम. तो बेकर, पाए. बेकर क्या बेक करता है? पाए. हैप्पी, जॉयफुल. सैड, डिप्रेस्ड. अननोन, फेम. इग्नोरेंस, विजडम. Alsatian, dog. Salmon, fish. Helicopter, sky. Ship, water. Finger, hand. Petal, flower. Pen, writer. Voice, singer. Mountain, high. Forest, dense. Television, watched. Newspaper, read. So like that we have completed our exercise number B of vocabulary part, in which हमने fill कर लिए analogies जो इसी से related है, इन box में से हमने यहाँ पर fill up कर दी हैं. Now we are going to study the grammar section. In the grammar section we are going to study about coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions क्या होते हैं? ऐसे two independent clauses to make a compound. दो sentences को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. यूज़ अ कॉमा बिटवीन द फर्स्ट independent clause and the coordinating conjunction. So we have to use the comma also. Like in this sentence you can see the but. My brothers like the mountains but I like the beach. So but is the coordinating conjunction. Now come to page number 78. Combine the sentences using a comma and a coordinating conjunction. We have to combine a sentence using comma and coordinating conjunction. I don't want to argue with you. I don't want to give in. So you are going to write I don't want to argue with you and don't want to give in. You have to write and in this sentence. She had a lot of friends. She was a friendly girl. She had a lot of friends, comma, yet was a friendly girl. I had a cute puppy, I lost him. I had a cute puppy, comma, but I lost him. Full stop. He studied for the test. He got a good grade. He studied for the test and got a good grade. We are going to write and in this sentence. Jatin can boil eggs. Sanjana can make toast. Jatin can boil eggs and Sanjana can make toast. We can go to Agra. We can go to Amritsar. We can go to Agra or Amritsar. Sahil moved to Mumbai. He moved home again. Sahil moved to Mumbai, comma, so moved home again. They didn't want to be late. They hurried. They didn't want to be late, so, they hurried. So today we have completed our
vocabulary part as well as our grammar part. So now we will go through this writing section given on page number 79. The poem is about cat that's in charge of security in a train. तो हमने poem पढ़ी जो कि थी cat के बारे में, जो कि इंचार्ज थी security train की. Write about an interesting train journey that you had recently. अब आपको आपकी train journey के बारे में यहाँ पे लिखना है. Write about the place from where you boarded the train and the destination of the journey. तो आपको यहाँ कहाँ से अपनी ट्रेन में आप बैठे, द ट्रेन यू ट्रैवल्ड इन, कौन सी ट्रेन में बैठे, द ट्रेन सीन एट द रेलवे स्टेशन, आपने कौन से ऐसे सीन्स देखे ड्यूरिंग द जर्नी, प्लेसेस दैट कम ऑन द वे, कौन सी जगह, कौन से पीपल से आप मिले एंड नोटिस्ड इन द ट्रेन, एनी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स ड्यूरिंग द जर्नी, जो भी हुई थी आपको यहाँ पर इन ब्लैंक्स में लिखना है अपने अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन जर्नी के बारे में. एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस chapter.